So today we are dealing with another chapter of human anatomy and physiology, which is the sense organs, right? Now, जब से हम छोटे थे तब से हम पढ़ते आ रहे कि that we have 5 sense organs that are the tongue, the nose, the eyes, the ears, and the skin, right? So in this chapter we will deal with 2 of them, which is the eye and the ears. Okay. So let us first start with the eyes, right? Now, first of all, before moving on with the eyes, we need to know what are receptors. Now, receptors are any organ or tissue which is sensible to any stimulus, right? So these receptors are specially divided into few categories, okay? Them being the mechanoreceptors, the chemoreceptors, the photoreceptors, and the thermoreceptors, and the phonoreceptors. Okay. Now, mechanoreceptors are the receptors with the any changes in the skin, or that is the touch stimuli. Okay. Next comes the chemoreceptors. Now, chemoreceptors suppose deals with the things we smell or the things we taste due to the chemical influence. Next comes the photoreceptors. अब photo word से पता चल रहा है कि ये light के साथ deal करता है, right? So photoreceptors are the receptors that act when there is the presence of light stimuli. Next comes the thermoreceptors. Now thermo से पता चल रहा है, obviously it deals with the heat. Now the thermoreceptors act when there is a heat stimulus, and the phonoreceptors act when there is a sound. Okay, good. So now let us move on with the eyes. Now सबसे पहले जान लेते हैं कि what are the other parts that are attached with the working of the eyes. First being the orbits. Now orbits are the sockets where the eyes are present, right? These are the orbits. Next comes the eyelids, the pair of eyelids that helps in closing and opening the eye or the movement of the eye, right? Next come the eyebrows. Now eyebrows का मेन जो काम होता है वो सपोज अगर पानी टपक रहा हो या फिर सर से थोड़ा पसीना टपक रहा हो तो it will guard the eyes. It will guard the eyes so that the water droplet or the sweat droplet does not enter the eyes, right? Next comes the tear glands. Okay, now the tear glands are also known as the lacrimal glands. Now what does the lacrimal glands help in? It obviously produces the tears, right? Now there are the tear ducts or the lacrimal ducts which helps in moving the tears from the tear glands to the respective eyes. Okay, now tears का काम क्या होता है? First of all तो it helps in lubrication of the eyes, मतलब ताकि वो dry ना हो जाए, ठीक है? Next comes that the tears contain some lysosomes. Okay, now lysosomes are the enzymes that helps in killing some germs or bacteria in the eyes, right? Next, it's also help in moisture, keep the eye moisturized, right? Good. Next comes the conjunctiva. Now conjunctiva से पहले एक बात जान के रखो कि that the tear ducts or the lacrimal ducts are also present on the side of the nose, okay, that connects the eyes with the nose. Now that duct is known as the nasolacrimal duct. Okay, now this nasolacrimal duct, through this sometimes the teardrops may enter our nasal cavity or any fluid entering through our nose may enter our orbits or the eye cavity, right? Okay. Next comes the conjunctiva. Now what is the function of the conjunctiva? The conjunctiva totally covers the eye. Okay, तो conjunctiva का लोकेशन यहाँ पे होता है जो पूरे eye को कवर करता है, ठीक है? हमने एक वर्ड सुना है conjunctivitis, right? Which is the inflammation of the conjunctiva. Okay, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. तो नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल्स. ओके, नाउ आई का सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरोटिक लेयर. ओके, नेक्स्ट कम्स द सेकंड लेयर व्हिच इज द choroid layer. Okay, and third is the most innermost layer which is called the retina. Okay, so first let us discuss about the sclerotic layer. Now sclerotic layer सबसे बाहर वाला outermost layer होता है which is
फाइब्रस एंड वाइट इन कलर, ठीक है। तो वो स्क्लेरोटिक लेयर सामने की तरफ जाके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन जाता है, ठीक है। तो दैट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरोटिक लेयर इज नोन एज द कॉर्निया, ठीक है। ये कॉर्निया वर्ड हमने बहुत पहले सुना है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, जब किसी का कॉर्निया अगर खराब हो जाता है तो the cornea needs to be replaced. Most of the time it is done by the whole replacement of the eye, okay. The when a healthy donor is donating the eye, okay, good. Next comes the second layer, which is the choroid layer, okay. Now the choroid layer or the second layer, okay, is having a rich blood supply, okay, or a rich supply of blood vessels, right. Now the choroid layer contains melanin, which is a dark pigment. What does that melanin helps in? That melanin inside the choroid layer helps in preventing the scattering of the light inside the eyes and also helps in the stopping the reflection inside the eyes, right. Good. Next, what it does is that the choroid layer has extended into the ciliary muscles, okay. Now these ciliary muscles, this is the lens here, now these ciliary muscles helps in the movement of the lens of our eyes, right. Good. Next, this choroid layer contains the iris, okay, which is found here, okay. That is the extension of the choroid layer is iris, ठीक है। तो iris का ही वो कलर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है ना। iris have some radiating muscles inside it, right. Now the iris has left some gap in here, right. Now this gap here is known as the pupil, ठीक है। नाउ जब लाइट एडजस्टमेंट होता है तो यही प्यूपिल कभी कभी छोटा हो जाता है और कभी कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब बहुत अंधेरा हो तो प्यूपिल हमारा डायलेट कर जाता है, ठीक है, दैट इज बड़ा हो जाता है। और जब जब लाइट बहुत ब्राइट होता है तब हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है, दैट इज इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स, राइट। सो इसी के साथ choroid layer का पार्ट्स कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन विद द retina, which is the innermost layer of the eye, right. Now the innermost layer or the retina contains two types of sensory cells, which are the rods and the cones. Now the rods contain the rhodopsin, which is responsible in the dim light only, right, and the cone, and it does not detect the color of the light, right. Next is the cones. The cones contains iodopsin. It suspects the bright light and also the different colors, right. Good. Now the distribution of these rhodopsin and iodopsin inside the retina is not equal throughout the eyes, okay. Now due to this there are few spots, there are a huge number of cones and rod cells, and there are spots where there is almost no sensory cells of rods and cones, right. So due to that there are two spots inside the eye, okay. Now the first being the yellow spot or the fovea centralis, or we can call it the macula lutea, okay. Now the yellow spot or the fovea centralis is almost present here, okay, which is the back of the lens, which is perpendicularly back of the lens, okay. Now in this yellow spot there are huge number of the sensory cells, most being the cone cells, okay. Now due to the presence of this huge number of rods and cone cells in this yellow spot, this is the area of maximum and the most clear vision, okay. Now exactly opposite of that is the blind spot, which is present in the spot where the nerves from the eyes converges to form the optic nerve, which will join the brain, right.
Now, this blind spot has no sensory cell. It neither has the rod cells nor does it have the cone cells, right? So, due to the absence of these sensory cells, there is no vision in this area. Okay, ठीक है? I hope you have clearly understood this point. Good. Now comes two type of liquids which are known as the aqueous humor and the vitreous humor. Okay. Now the aqueous humor is present between the cornea and the lens, that is जो ये वाला एरिया है, ठीक है. तो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो थोड़ा एक वाटरी लाइक लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है. नाउ दैट हेल्प्स इन maintenance of the protection of the lens and the part of the eyes like the cornea and other parts. Okay, it also helps in the reflection of the light. Good. Okay, next comes the vitreous humor. The vitreous humor का काम क्या होता है? Mainly it helps in the protection of the retina and optic nerves, ठीक है. And it also helps in maintaining the shape of the eyeball. और जो ये वाला पूरा जो तुम पार्ट देख रहे हो, ये व्हाइट वाला, ये पूरा वाला पार्ट है vitreous humor. ठीक है? I hope you have clearly understood. Good. Next, now comes the lens. Now the lens is a biconvex crystalline body present in front of the eyes, which is held by the suspensory ligaments. Suspensory ligaments of the ciliary body, right, which holds the lens, right. Now these lens contains a lens fibers. Okay, now इसके थ्रू ही हमारा लाइट रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है. गुड. we actually see, right. now सबसे पहले तो लाइट का एंट्री होता है आइज में, मतलब लाइट बाहर से किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे आइज में जाता है, ठीक है. तो दैट इज दैट एंट्री ऑफ द लाइट इन द आइज. नेक्स्ट जो होता है वो फोकसिंग होता है. ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ देखने में, दैट इज वी हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट टू क्लियरली सी व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी, राइट. मतलब अगर हमें सामने देखना हो तो हमें पहले कंटिन्यूस देखना पड़ता है, फिर ही हम सामने देखेंगे, नहीं तो हमको पूरा दिखेगा, ठीक है, आसपास का. गुड. नेक्स्ट कम्स द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस. तो फोकसिंग के बाद वो जो मैसेज होता है वो नर्व इम्पल्सेस goes to the brain through the optic nerves, right. Next comes the interpretation of that image by the brain, ठीक है. तो देखो जब पहले हम इमेज को देखते हैं, that is the before the transmission of the impulses, the image that is formed is actually a inverted image or a real image, ठीक है. तो ब्रेन में जाने के बाद ही, इंटरप्रिटेशन होने के बाद तब जाके वो ऑब्जेक्ट हम सीधा देखते हैं, दैट इज इट इज फॉर्म्ड इन अपराइट और द वर्चुअल इमेज दैट वी एक्चुअली सी, ठीक है. जैसे कि हम अगर सामने कुछ देख रहे, सपोज ये जो मार्कर है तो मेरे से सीधा ही देख रही हूँ ना, उल्टा तो नहीं देख रही ना, तो दैट वर्क इज डन बाय द ब्रेन. ओके. नेक्स्ट कम्स द accommodation or the focusing of the image. Now there is focusing for the distant object and for the near objects, right. now distant vision के वक्त क्या होता है, the lens are flattened, ठीक है. तो जब लेंस फ्लैट होगा तभी हम दूर की चीजें देख सकेंगे, ठीक है. and while focusing on near objects or the near vision, the lens becomes more convex or rounded, ठीक है. तो अब तुमको तो पता ही है कि the movement of the lens is controlled by the suspensory ligaments of the ciliary body, right. Good. Next we move on to the dark and light adaptation, ठीक है. तो सबसे पहले तो dark and light मतलब dim light और bright light, उससे हमको पता ही चल रहा है that rods and cone cells का मामला चल रहा है, ठीक है. तो डार्क एडेप्टेशन मतलब जब हम किसी ब्राइट रूम से, ठीक है, एक डार्क रूम में एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमें देखने में प्रॉब्लम होता है, राइट.
हम सब कुछ थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखता है, ठीक है। मैं डार्क मतलब ये नहीं कि पूरा अंधेरा है, मतलब कंपैरेटिवली वो ब्राइट वाले रूम से डार्क था, ठीक है। तो हमें देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एडेप्टेशन होता है और फिर हमें सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है, ठीक है। तो दैट पार्ट इज नोन एज द डार्क एडेप्टेशन, राइट। तो क्या होता है कि जब हम ब्राइट लाइट, एक्सेसिव ब्राइट लाइट में जाते हैं, हमारा रॉड सेल्स इज डिस्ट्रॉयड, राइट, बिकॉज हमको पता है दैट रॉड सेल्स डील्स विद द डिम लाइट, ठीक है। तो जब हम फिर से अंधेरे वाले रूम में जाते हैं, द रॉड सेल्स टेक अ बिट ऑफ टाइम टू रीगेन देमसेल्व्स, ठीक है। तो जब रॉड सेल्स रीगेन कर लेता है अपने आप को, तब इट हेल्प्स इन सीइंग इन द डार्क रूम ऑल्सो। और उसके साथ साथ क्या होता है, द प्यूपिल ऑफ आवर आइज डायलेट, ठीक है, ताकि और ज्यादा लाइट एंटर करे आइज में और हम डार्क रूम में भी क्लियरली देख सके, ठीक है। अब दिस इज द डार्क एडेप्टेशन। नेक्स्ट कम्स द लाइट एडेप्टेशन। लाइट एडेप्टेशन में क्या हो रहा है, दैट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम अ वेरी डार्क रूम टू अ रूम वेयर देयर इज सम ब्राइट लाइट, ठीक है। तो क्या होता है, एकदम से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अगर बहुत ब्राइट लाइट देखें, ठीक है। मतलब जब हम हमारे डार्क रूम से अगर घर से बाहर जा रहे हैं और सनलाइट हमारे आंखों में गिरे, तो झट से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यों बंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द आइज, ठीक है। मतलब वो लाइट कुछ ज़्यादा ही होता है देखने के लिए, हम देख नहीं पाते उस लाइट में, वी आर dazzled by it. So when after a few minutes we start seeing everything normally, right? Now that adaptation is known as light adaptation, ठीक है। उसमें क्या होता है, that due to the presence of the dark light previously, there are more rod cells in comparison to cone cells, right? तो जब हम कुछ देर फिर उस ब्राइट लाइट में रहते हैं, द रॉड सेल्स और द रोडोप्सिन्स आर ब्लीच्ड, ठीक है, जिसकी वजह से कोन सेल्स फिर से एक्टिव हो जाता है और हम क्लियरली ब्राइट लाइट में भी देख सकते हैं, सॉरी। Another thing that happens is that the pupil छोटा हो जाता है, pupil constrict, so that we can clearly see in the bright light also. So this concludes the dark and the light adaptation. Okay, good. Next we will move on with the defects of the eyes, right? The short sightedness or the myopia, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, हम सिर्फ पास की चीजें ही देख सकते हैं और दूर की चीजें देखने में हमें दिक्कत होती है, राइट। नाउ दैट इज ड्यू टू two reasons, okay? Either it must be due to the lengthening or the stretching of the eyeballs, or it might be due to the more curving or the of the lens, ठीक है। जो लेंस होता है वो थोड़ा सा और राउंड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम दूर की चीजें नहीं देख पाते, ठीक है। Now that can be corrected by using the concave lens so that the light converges again even though the lens is shortened. Okay, good. Comes the far-sightedness or the hyperopia. तो far-sightedness में क्या होता है, that we are able to see the distant objects, but जो सामने की चीजें हैं वो हमको नहीं दिखता, ठीक है। Now that is either due to the shortening of the eyeball, ठीक है, जो eyeball होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, or it can be due to the flattening of the lens, ठीक है। तो that can be corrected by using the convex lens which diverges the light rays, ठीक है, good. Next comes the astigmatism. Now astigmatism में क्या होता है, that the cornea is becomes कर्व, ओके, मतलब कई जगह पे वो कर्व होता है और कई जगह पे वो फिर से ऊंचा होता है, ठीक है। दैट इज इट इज अनइक्वल। कॉर्निया का जो शेप होता है वो राउंड होता है ना बाहर की तरफ, तो जब एस्टिग्मेटिज्म होता है उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट डिप्रेशंस, ठीक है, क्या होता है, हम कुछ जगह पे ब्लर देखते हैं और कुछ जगह पे हम क्लियर देखते हैं, ठीक है। दैट
is due to the problem in the cornea. Now that can be corrected by using the cylindrical lens only. ठीक है. Next comes the presbyopia. Now presbyopia में क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके आंखों में they are not able to see the objects which are nearer to them. उनको दूर की चीजें दिखता है which is almost like farsightedness. ठीक है. तो but ये presbyopia is only in the older people. ठीक है. तो it is also corrected by using the convex lens. Good. Next comes the cataract. Now cataract क्या होता है? Cataract में जो होता है, जो lens होता है, वो lens becomes opaque. ठीक है, due to some infection or due to some other problems. Now ये cataract की वजह से obviously एक आदमी कुछ भी नहीं देख पाता. Now for that we have to use a very high powered lens, or the lens have to be replaced with a smaller plastic lens which are now found. ठीक है, और we have to remove it by surgery. ठीक है. Good. Next comes the night blindness. ठीक है. Night blindness में क्या होता है, जो rod cells होता है वो उसका amount कम जाता है. ठीक है. And we know that rod cells which contain rhodopsin is responsible for the vision in the dim light. इसकी वजह से रात को जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है वो नहीं देख पाता. ठीक है. This occurs mainly due to the vitamin A deficiency. ठीक है. तो विटामिन A deficiency की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है mainly. Next comes the color blindness. तो कुछ लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जिनको जो रेड कलर होता है या फिर ग्रीन कलर होता है वो नहीं दिखता. ठीक है. Now that is only due to the जेनेटिक डिफेक्ट. ठीक है. तो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कुछ लोग कलर ब्लाइंडनेस होता है. दिस मोस्टली ऑकर्स इन द मेल्स. ओके, फीमेल्स में उतना नहीं होता. गुड. नेक्स्ट कम्स द कॉर्नियल ओपेसिटीज. वर्ड से ही पता चल रहा है दैट द कॉर्निया टर्न्स ओपेक, राइट. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉर्निया और द replacement of the eye if a healthy donor is available for the donation of the eyes, right? Good. Next comes the squint. ठीक है. Now what is squint? Now हम कभी कभी बोलते हैं ना कि वो टेढ़ा है. ठीक है, उसका आँख टेढ़ा है. तो that is nothing but the squint. That is the cross eye or the wide eye. ठीक है. Now that cannot be changed. Okay. जिनका क्रॉस आई या वाइड आई होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है. ठीक है. दैट इज फ्रॉम द बर्थ ओनली. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द स्टीरियोस्कोपिक और द बाइनोक्यूलर विजन. दिस इज नथिंग बट सिंपली दो आंखों से ही सिर्फ दिखेगा, एक आंख से हमें प्रॉपरली नहीं दिखेगा. ठीक है. दैट इज अगर हम अपना एक आंख बंद कर लें तो हमें पता नहीं चलेगा दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. ठीक है. तुम खुद ही करके देखो, समझ जाओगे. अपना एक आंख बंद करके देखो, तुम्हारा जो सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसका पोजीशन कुछ और दिखेगा जो एक्चुअली होता है, राइट. तो दैट इज व्हाट बाइनोक्यूलर विजन इज. ठीक है. मतलब दोनों आंखों, जब हम दोनों आंखों से देखेंगे सिर्फ तब ही हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सही पोजीशन या फिर हम डिस्टेंस नाप सकेंगे. Only with one eye we cannot see. तो ये ह्यूमंस में होता है, मंकीज में होता है. ठीक है. गुड. नेक्स्ट कम्स द पर्सिस्टेंस इमेज और द आफ्टर इमेज. ठीक है. पर्सिस्टेंस इमेज और आफ्टर इमेज में क्या होता है, जब कभी हम बहुत देर से कुछ ब्राइट लाइट की तरफ देखते हैं या फिर कुछ ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं और फिर हम तुरंत बाद कुछ डार्क ऑब्जेक्ट या फिर डार्क स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तब हमको वो इमेज और वो प्रीवियस वाला ब्राइट कलर इमेज उस डार्क वाले स्क्रीन में भी दिख जाता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली द आफ्टर इमेज. दैट इज वो ऑब्जेक्ट से हम आंख हटाने के बाद भी वो वाला ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट हमको दिखता है. ठीक है. नाउ व्हाई दैट ऑकर्स? दैट ऑकर्स ड्यू टू द persistence of the rods and cone cells. Okay, good. रखो. जब हम मूवीज थिएटर्स में जाते हैं तो हम लगता है कि हमें वीडियोस दिख रहा है, राइट. ठीक है. बट एक्चुअली हमने सुना है या फिर देखा है दैट दे यूज द रील्स.
ठीक है। जो रील्स में क्या होता है, वो कुछ पिक्चर फ्रेम्स होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, सपोज 24 to 27 पिक्चर्स आर शोन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो स्लाइड शो इतना क्विक होता है कि हम एक फ्रेम पकड़ नहीं पाते, ठीक है। वो हम फ्रेम पकड़ नहीं पाते, जिसके वजह से दैट ऑल सेट ऑफ पिक्चर्स वी सी एज वीडियो, राइट। नाउ दैट इज ओनली द इल्यूशन क्रिएटेड बाय आवर आईज, जिसकी वजह से हमें द सेट ऑफ पिक्चर्स भी वीडियो जैसा या फिर लाइव मूवमेंट्स टाइप के दिखते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, गुड। About the structure of the ear, then we'll move on with its function. Okay, good. So the ear is divided into 3 parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear, or the membranous labyrinth. Okay, so first of all, the outer ear consists of the pinna, which is this part that we can see from outside. Yeah. Then it contains the auditory canal, which is the canal before the eardrum. Okay, now eardrum or the tympanum, obviously हम जो कान का पर्दा बोलते हैं वो actually वो eardrum होता है, ठीक है, good. Next comes the middle ear. Now the middle ear consists of a set of 3 bones which are also known as ear ossicles. So these ear ossicles contain the malleus, the incus, and the stapes. Okay, now these malleus, incus, stapes, that is after the ear ossicle, it moves on with the eustachian tube. Okay, eustachian tube. Now this eustachian tube is actually the connection of the ear with our throat. Okay, now let us move on with 2 more parts, which are the oval window and the round window. Okay, now this oval window is the opening to the inner ear, ठीक है। और जो round window होता है, that is also connecting the middle and the inner ear. Okay, so after completing with the middle ear, we will move on with the inner ear or the membranous labyrinth. So it consists of 2 parts: the cochlea and the semicircular canals. Okay, now the cochlea is a spiral or a snail-shaped structure which consists of 3 canals, as you can see here. Okay, now you need to know another thing, is that this median canal, okay, consists of a membrane known as the basilar membrane, ठीक है। और basilar membrane कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट मीडियन कैनाल का। तो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दो सेंसरी सेल्स टुगेदर आर नोन एज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. व्हाट इज इट कॉल्ड? द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है. तो इसी सेंसरी सेल्स की वजह से द sound that we hear are interpreted by the ear and the impulses are sent to the brain through the auditory nerves. Okay, good. Next comes the semicircular canals. Now the semicircular canals का structure कुछ इस तरह का होता है, ठीक है. तो the semicircular canal first of all consists of 3 spiral shaped canals. Okay, और उन कैनाल्स के बेस में देखो थोड़ा ये वाला पार्ट्स ब्रॉडेंट होता है, राइट, थोड़ा वाइडेंट पार्ट होता है. तो ये वाला ब्रॉड और जो वाइडेंट पार्ट है सेमीसर्कुलर कैनाल्स का, उसे हम एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है. दिस इज नोन एज द एम्प्यूला. नाउ दिस एम्प्यूला इज देन कनेक्टेड विथ 2 more structures which actually connects the semicircular canals with the cochlea. These are the utriculus and the sacculus. तो utriculus का लोकेशन कुछ यहाँ पे होता है और sacculus का लोकेशन कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है. Now तो अब आते हैं फंक्शन, ठीक है, मतलब साउंड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑडिटरी नर्व तक कैसे जाता है, ठीक है. तो we all know that sound travels via vibrations, right. तो जब कोई साउंड हम हियर करते हैं, that is actually the vibration caught by the pinna. Then those vibrations are transported equally through the
ऑडिटरी कैनाल के बाद वो जाके सीधा ईयर ड्रम पे हिट करता है। तो ईयर ड्रम तो स्ट्रेच इलास्टिक की तरह होता है, ठीक है। तो व्हेन एंड वी ऑल नो हाउ द ड्रम वर्क्स, राइट, जैसे वाइब्रेशन की तरह वो ड्रम वाइब्रेट करता है। तो उसी तरीके से ईयर ड्रम भी वाइब्रेशन रिसीव करने पर वाइब्रेट करता है, ठीक है। देन दैट वाइब्रेशन is equally balanced by the eustachian tube. Now ये eustachian जो ट्यूब होता है वो वाइब्रेशन को इक्वली ईयरड्रम के बाहर और अंदर बैलेंस करता है, ठीक है। तो फिर eustachian ट्यूब के बाद the vibrations starts the movement of these three ossicles, okay। तो जब वो वाइब्रेशन एक लीवर की तरह लास्ट में जाके स्टैपिस को हिट करता है, मतलब जो लास्ट वाला ईयर ऑसिकल है, दैट स्टैपिस देन हिट्स द ओवल विंडो, ओके। और ओवल विंडो हिट करने के बाद दैट एंटर्स द इनर ईयर, ठीक है। तो इनर ईयर में जब वो एंटर करता है और कॉक्लिया में जाता है, तो द फ्लूइड दैट आर द एंडोलिम्फ एंड द पेरिलिम्फ, द फ्लूइड इनसाइड द कॉक्लिया स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो उस वाइब्रेशंस की वजह से जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है वो भी वाइब्रेशंस कैप्चर कर लेता है, ठीक है। नाउ दीज ऑर्गन्स ऑफ कॉटी आर कनेक्टेड विद दिस ऑडिटरी नर्व, ठीक है। क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटी हमने पहले पढ़ा है कि दैट इज अ सेंसरी सेल्स, ठीक है। तो दैट वाइब्रेशंस इज कैप्चर्ड बाय द ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड it is sent to the auditory nerves, and the auditory nerves carries the impulse to the brain and interprets the sound, okay, good। तो इसी तरीके से हम साउंड को हियर करते हैं। तो ईयर का एक बैलेंस तो एक फंक्शन तो हो ही गया, दैट इज द हियरिंग। नाउ ईयर्स अनदर फंक्शन इज मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। अब ऐसे होता है, राइट। तो when we move the fluid inside the semicircular canals and the cochlea also starts moving, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ इम्पल्स हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसी तरीके से बॉडी बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। सो द एम्प्यूलर पार्ट ऑफ द सेमीसर्कुलर कैनाल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब जो मूवमेंट वाला होता है। और यूट्रिकुलर्स एंड सैक्युलर्स इज रिलेटेड विद द स्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब जो खड़े रहने का बैलेंस है, ठीक है। समझ गए? आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो विद दिस फंक्शन ऑफ द ईयर वी कंप्लीट द फुल चैप्टर, ओके। तो सेंस ऑर्गन्स हमारा अभी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है अभी। आई विल ऑल्सो attach the notes, so yeah, thank you for coming.